हेलो फ्रेंड। हाय, दिस इज़ योर गाइड। आज हम यहाँ पे यूपीएससी सिलेबस डिस्कस करेंगे मेंस का। ये जीएस कोर का इन्होंने एक सिलेबस दिया है पूरा डिटेल में, और माइक्रो टॉपिक लिस्टिंग दी है मेंस के लिए। ये रिवाइज एडिशन है सीएसई सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 का। आप यहाँ से एक डाउनलोड कर सकते हो उनकी वेबसाइट पे जाकर। आज हम वही डिस्कस करेंगे कि कौन से कंटेंट में क्या टॉपिक दिया है GS-1 से लेकर GS-4 तक। GS-1 में दिया है इन्होंने मॉडर्न इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ है, इंडियन कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, फिजिकल जियोग्राफी, वर्ल्ड एंड इंडिया, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन जियोग्राफी, इंडियन सोसाइटी। GS-2 में है फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, लेजिस्लेचर, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस। GS-3 में है GS-3 में है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, पॉलिसी एंड रिफॉर्म्स, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया। ये GS-3 का था। और GS-4 में एथिक्स एंड अप्लाइड एथिक्स। अब इन्होंने GS पेपर 1 का पूरा डिटेल में सिलेबस दिया है, 1 बाय 1। मॉडर्न इंडिया में है यहाँ पे बिफोर यूरोपियन पेनिट्रेशन इन इंडिया। So later Mughal disintegration of the Mughal Empire, rise of the regional state, Bengal, Hyderabad, Carnatic, Awadh, Mysore, Kerala, the Sikhs, Rajput states and Jats, Marathas, rise and fall of the Maratha, socio and economic condition, people in the 18th century, culture, cultural life of people in 18th century, scientific outlook in 18th century. Second है beginning of the European penetration in India, trade between India and Europe, Portuguese domination, spice trade of Dutch, British trade, expansion in India and its effect on India from 1600 to 1744, Anglo-French struggle and subvention of Indian political power. थर्ड है expansion of the British Empire in India 1756 से लेकर 1888, British expansion in Bengal, importance of the Battle of Plassey, clash between the Mir Qasim and East India Company, dual system of administration in Bengal, wars under Warren Hastings and Cornwallis, expansion under Lord Wellesley, subsidiary alliance policy of Wellesley, expansion under Cornwallis, overpowering of the Maratha Confederacy. फोर्थ है कंसोलिडेशन अंडर ब्रिटिश रूल 1880 से लेकर 1857, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन ऑफ डलहौजी। फिफ्थ है स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एंड ऑफ द डुअल गवर्नमेंट एंड डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल, फॉर्म 1772, रिलेशन बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश स्टेट बिटवीन 1765 से लेकर 1833, रेगुलेटिंग एक्ट of 1773 and Fits India Act, Charter Act of 1813 से लेकर एंड 1833। सिक्स्थ है ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया फ्रॉम 1757 से 1857, कमर्शियल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम 1757 to 1857, इफेक्ट ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी ऑन इंडियन ट्रेड, इफेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑन इकोनॉमिक relations with India, factors that make Britain favorable for industrial revolution, drain of wealth, development of means of transport and communication and industry, land revenue of policy of British, permanent royalty and mahalwari, effect of land revenue policy on agrarian relation in India. सातवां है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, सिविल सर्विसेज इन इंडिया, रोल ऑफ द आर्मी, पॉलिसी, जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, इंट्रोडक्शन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आठवां है एट्थ है सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, मॉडर्न थॉट्स दैट इन्फ्लुएंस ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया, कंजर्वेटिव्स एंड रेडिकल्स, पॉलिसी ऑफ पार्शियल मॉडर्नाइजेशन, humanitarian measures, abolition of satis, etc., spirit of the modern education. Ninth is social and religious reforms in 19th century. Social and religious reforms in 19th century, role of the Raja Ram Mohun Roy in the social and religious regeneration, radical
Trends between the 1820 to 1820 and 1830. D. Rogias, D. Rogio, D. Rogia. Ishwar Chandra Vidyasagar, Girls' Education, Child Marriage, Widow Remarriage and Caste Hierarchy. Why impact of the Western ideas felt more in Bengal than in Western India? Fight against caste system, untouchability and widow remarriage. Parsi reforms, Sikh reforms, role of women, state of the educating in India during the 19th century. 10th है revolt of the 1857 reason of the revolt of 1857 participation in revolt spirit of the revolt response of the British impact of the revolt 1857 factors responsible for failure of revolt 1857 11th administrative changes post revolt of 1857 government of India act 1858 Indian council act 1867 role of Mayo Liston Ripon promotion of the local bodies and role of Ripon changes in the army change relationship with the princely state reactionary policy of British divide and rule restriction on press act related to it attitude towards the social reform hostility towards educated Indians carrot and stick policy labor legislation economic impact 12th है economic impact of British rule ruin of the traditional economy impoverishment of peasantry ruin of the old zamindars rise of the new landlordism deterioration of agriculture development of modern industry rise of the new social class in India poverty and famines drain of wealth theory 13th है nationalist movement 1858 से to 1905 factors responsible for rise of nationalism predecessors of Indian National Congress Indian constitutional reforms of moderates economic reforms by moderates administrative and other reforms by moderate defense civil rights method of constitutional agitation of moderate British response evaluation of role of moderates 14th है social and religious reforms after 1858 factors responsible for religious reforms 19th century religious reforms in Maharashtra Swami Dayananda and Arya Samaj Raja Ram Mohan Rai Theosophical Society Swami Vivekananda Aligarh School of Thought reforms amongst Parsis limitations of religious reforms movement to improve position of the women struggle against caste effect of the national awakening on social reform social legislation in the 19th and 20th century 15th है नेशनलिस्ट मूवमेंट 1905 से लेकर 1918 तक ग्रोथ ऑफ द मिलिटेंट नेशनलिज्म हाउ मिलिटेंट नेशनलिस्ट डिफरेंट फ्रॉम मॉडरेट्स स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट पार्टिसिपेशन फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन वुमेन पार्टिसिपेशन बिफोर गांधी growth of the revolutionary terrorism Indian National Congress between 1905 to 1914 Morley-Monte reforms Muslim League and growth of communalism British and used Muslim League to fight rising nationalism nationalist and World War One Home Rule League movement revolutionary organization like Ghadar Party Lucknow session of 1916 उसके बाद है यहाँ पे स्ट्रगल फॉर स्वराज 16th टॉपिक है पोस्ट वर्ल्ड वार सिनारियो फेवरेबल फॉर नेशनलिज्म इम्पैक्ट ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन ऑन नेशनल मूवमेंट मॉन्टेगुचाल चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स रोलेक्ट एक्ट अराइवल ऑफ द महात्मा गांधी एंड हिज आइडिया चंपारण सत्याग्रह अहमदाबाद मिल स्ट्राइक सत्याग्रह अगेंस्ट रोलेक्ट एक्ट जलियांवाला बाग मसाकर खिलाफत मूवमेंट ऑन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इम्पैक्ट ऑफ चौरा चोरी इंसिडेंट रोल ऑफ स्वराजिस्ट स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस मूवमेंट राइज ऑफ द socialism within Congress peasant tribal and workers agitation socialist turn to revolutionary terrorism response of the British to revolutionary terrorism boycott of the Simon Commission Nehru report significance of the Purna Swaraj resolution Dandi March program Obsidian civil disobedience movement 1930 to 34 and British response first roundtable conference Gandhi Irvine Pact and second roundtable conference second phase of the civil disobedience movement Roman participation after coming of Mahatma Gandhi communal award Pune Pact Mahatma Gandhi fast unto death Mahatma Gandhi and B.R. Ambedkar approach to caste and untouchability third roundtable conference 17 topic है nationalist politics 1935 to 1939 government of India Act 1935 formation of the Congress ministries growth of the socialist idea Congress and international affair 18 topic क्या है towards independence national movement in the princely state growth of the communalism national movement of World War
2nd August of 1914, individual civil disobedience movement 1940 to 41, Crisp's mission of the Crisp's mission and reasons for failures, Quit India movement and British response movement, participation in the end stage of the freedom struggle, Azad Hind Fauj and SC Subhash Chandra Bose, INA trials, Wavell plan and Shimla conference. 1945 to 46 election and communal divide, RIN, Royal Indian Navy mutiny, labor and peasant unrest all over the country, reasons behind British support for India, demand for freedom, cabinet mission towards partition, toward partitions and independence, rise of the Muslim communalism and partition of India, the Indian Independence Act of July 1947, role of the various leaders, factors leading to partitions, why Congress accepted partitions of India. उसके बाद है यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन है यूपीएससी सिलेबस पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट टॉपिक है इसमें चैलेंजेस बिफोर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, communal rights, regions most affected, partition and independence, Punjab, Bengal, Assam, Sindh, Radcliffe Commission and challenges before Boundary Commission, Radcliffe Commission and its composition, drawbacks of the Commission, division of sources, finances, defense personnel and equipment, civil government, assassination of the Gandhi, resettlement and the rehabilitation of refugees, shift to constitutional democracy, Indian states, policy of equal federal 1935 to 1947, plan of consolidation, integration of princely state, Junagadh, Kashmir, Hyderabad, aftermath of integration. उसके बाद है गोवा एंड Pondicherry, tribal integration, root of Indian tribal policy, reasons of the dismal performance of tribal policy, positive development happened due to a state initiative since 1947, issue of language, the official language, feature of the Official Language Act, framing of the Indian Constitution, India, evolution of the Constitution and main provisions, steps to the constitutional developments in the Indian Constitution, main provisions, the Constituent Assembly, formation of the Constituent Assembly, compulsions and issues in front of the assemblies, from colony to democracy, challenge of building democracy, challenges before East India ECI, Election Commission of India and conduction of the first general election, starting of one party dominance of Congress system, nature of the Congress dominance, 1967 election, split in Congress, emergence of the opposition parties, role of the opposition parties, various opposition parties, economic consolidation, economic development and planning, ideas of development planning, formation of the planning commission, first 5-year plan, second 5-year plan, achievement of the plans from 1947 to 1965, key controversies regarding 5-year plan. उसके बाद में है ग्रीन रिवॉल्यूशन, prevailing condition before the introduction of the green revolution, initiative prior to the green revolution to boost agriculture, governments other positive initiative during the green revolution period, positive and negative impact of the green revolution, operation flood and cooperatives, formation of Amul, starting and impact of the operation flood, limitations of the cooperativization, development of the land reform in India between 1947 to early 1960, abolitions of the intermediaries, tenancy reforms, sealing and land holding, Bhutan movement, aims and advantages of the Bhutan movement. सिक्स्थ है इसमें इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशनशिप, इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक इशूज, फीचर्स ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इमर्जेंस ऑफ द नाम एंड इट्स समिट, organizational structure and membership, India's and its member, India and China, India and Pakistan, India and Bangladesh, creation of the Bangladesh, India and Sri Lanka, India with Nepal, Bhutan, India relationship with the USSR and USSR during the Cold War, analysis of the Nehruvian foreign policy. Seventh, crisis of the democratic order, the JP movement on emergence 1975 to 1977, testing of the Indian democracy tested. उसके बाद में है बैकग्राउंड ऑफ द इमर्जेंस ऑफ द इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, गुजरात एंड बिहार मूवमेंट
conflict with the judiciary, declaration of the emergency, crisis and response, controversies regarding emergency, lessons from emergency, politics after emergency, Lok Sabha election 1977 and Janata Party, the position, initial years of the BJP, the Naxalite movement, communalism, secularism, secularism and democracy. Sorry for the pronunciation. Ayodhya dispute, demolition and after communalism and use of the state power, revival and growth of the communalism, anti-Muslim riots in Gujarat, the Punjab crisis, Operation Blue Star, demand of Khalistan, basis of regionalism, politics in the states, roots of tension, challenges regionalism, Tamil Nadu, Dravidian movement, Andhra Pradesh, Assam, West Bengal, and Jammu Kashmir, external and internal dispute, secessionist movement in northeastern states, accommodation and national integration. Eighth है popular movement, nature of the popular movement, environment movement, चिपको movement, नर्मदा बचाओ आंदोलन, सरदार सरोवर project, debates and struggles, party based movement and non-party based movement, caste and untouchability, anti-caste politics and strategy, issues of Dalit Panther, origin of and their activities, agrarian struggles, Bharatiya Kisan Union, growth and its characteristics. उसके बाद में नेशनल फिश वर्कर फोरम, एंटी अटैक मूवमेंट, ओरिजिन एंड इट्स लिंकेज, इंडियन वुमेन सिंस इंडिपेंडेंस, लेसन फ्रॉम पॉपुलर मूवमेंट, recent developments in Indian politics है. Ninth topic, context of the 1990s, era of coalition, decline of the Congress, alliance politics. उसके बाद में है political rise of the other backward classes, Mandal implement of the Mandal Commission, political fallouts, NEP 1991, LPG policy, tax reform, privatization, globalization, NICT, nuclear policy, emergence of the new consensus, Lok Sabha election 2014, terrorist trouble and relations with Pakistan. कंटेम्प्रेरी इश्यूज है कुछ, पॉलिटी, reorganization of the state, emergence in India, linguistic regionalism in India, Lok Sabha elections 2014-18, economic, agriculture since 12th year 5-year plan, industry since 12th 5-year plan, new economic policies and its impact, social issues related to the vulnerable section, tribal issues and policies, consolidation issues, women on evolution of the women movement, agrarian struggles, problems of the caste and social consolidation, communalism, secularism and social consolidation, regionalism, issues on India, issues of the linguistic minorities, environmental movements. आज हम इतना ही रखते हैं इंडियन हिस्ट्री और कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ तक, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो. इंडियन कल्चर है, ज्योग्राफी है, GS-1 का ही सिलेबस कंप्लीट होने का है. हम ये पार्ट 1 करेंगे, उसके बाद में पार्ट 2 डालेंगे, उसमें पार्ट 2 में नेक्स्ट जो GS-1 का सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ये वीडियो आप 1-2 बार देखिए. सिलेबस आपको ऑन द टिप होना चाहिए, पूरा रिमेंबर होना चाहिए, क्योंकि यही कीवर्ड्स होते हैं जो अब हम पढ़ते हैं तो हमें हेल्पफुल होता है ड्यूरिंग योर UPSC प्रिपरेशन. थैंक यू वंस अगेन. गुड नाइट.